चलिए, a very good evening everyone. So we are looking at how to study current events. Basic चीज is this. Current event में basically it's, as the name implies, about what is happening in the society in the real time. तो उसको आपको अपडेट करना है. तो I always suggest one tactics. How much time you people have spent so far? मतलब how much since preparation? 2 months. 1 year, 5 months, 2 months. Sorry? First day. Okay. Other people? मतलब roughly 1 month, 2 months. How many of you have remembered the syllabus by heart? किसका वेट कर रहे हैं? ये समझिए, देखिए करंट इवेंट इज समथिंग दैट इज हैपनिंग इन रियल लाइफ. दैट्स करंट इवेंट. You need to understand what is relevant, what is not. That's the art you need to understand. Because अगर दो न्यूज आ रही हैं, say for example, अभी हम पेपर को एक बार व्यू एनालाइज कैसे करना है. For example, there are two news. अब you have to tell me, एक न्यूज है, जैसे मान लेते हैं Putin says XYZ to Donald Trump, say for example. Other news says Indian government has brought a policy on investment. So which of these two is relevant for you? Second one. Because why it is not relevant? We don't care what he said to put Donald Trump until unless, because Donald Trump is not the president now. If he would have been the president and then he is saying something, then it is for America. So ये फर्क समझने के लिए कि two events both are reported in newspaper. Because newspaper is not written for you. It is written for general public. They will report both events. You have to pick and choose which event is important. And even in that event, you need to know what is important. Because वहाँ पे तो बहुत कुछ लिखा होता है. Everything is not important for you. उसको समझने के लिए the first stage that I always prescribe to everyone is, the stage one is rot learn the syllabus. It's very important. Because how would you know what is important? या तो दो तरीके हैं. Either you spend 1 year and do all the subjects and then prepare for current event. तो उसमें क्या होगा? Once you have prepared all the subjects, you already know what I have to study. You have studied president, so you know what dimension of president you have studied. Any current event you can easily pick and note down. But right now you know nothing क्योंकि आपने syllabus तो करा ही नहीं है. Syllabus is not done yet. So first stage is rot learn the syllabus. इससे you will not identify everything, but at least you will get a fighting chance. Means if there is a news, so you know from the syllabus you read these lines. So by heart you know the lines, so you can predict whether this is useful or this is not. बात समझ में आ रही है? Broad framework will be available to you. You will not go beyond that framework. वरना आप फॉर एग्जांपल करंट इवेंट के नाम पे इफ यू सी द वीडियोस ऑन यूट्यूब, कुछ भी दिखा रहे हैं, कुछ भी दिखा रहे हैं. गॉडसे पे पूरा 15 मिनट की करंट इवेंट की वीडियो पड़ी है. उसका क्या मतलब? कौन सा गॉडसे पे क्वेश्चन आने वाला है? हाँ, मूवी. अब उस पे लोगों ने आई एम टॉकिंग अबाउट वेरियस एडटेक प्लेटफॉर्म. आप एडटेक प्लेटफॉर्म पे देखिए, वहां पे गॉडसे गांधी मूवी पे पूरी डिबेट है. हाउ इज इट रेलिवेंट फॉर अस? बिकॉज यूपीएससी few things you need to keep in mind, जो मैं सेकंड स्टेज में बताऊंगा. फर्स्ट स्टेज में you need to understand, learn the syllabus completely by heart. Yeah, I always says it is not only for current event, for every subject you are doing. If you learn the all 4 GS syllabus and you're optional also, if you learn them, then you have a broad outline. Within this confines I have to study. Clear? First stage. Second stage is about do and don'ts. There are few key rules. There are few key rules that you can keep in mind when it comes to current event. What are the key rules? Number 1, nothing political is important. Nothing political is important. How? Let's say अभी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट. A Hindenburg report has been published on Adani. It has said that Adani has committed the India's largest corporate fraud. ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है, उसमें आपका बताया तो नहीं जा रहा. I know, you know why our media is not covering. ठीक है, because most of the owned by corporate houses. That's the problem we have. Nonetheless, तो इसमें this news
is political in origin. I can guarantee you, हिंडनबर्ग पे कभी पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा. UPSC will not ask anything in mains or prelims about Hindenburg. No, nothing whatsoever. हाँ, अब आता है spin-off. Second thing is, first is nothing political, but spin-offs are important. What is this spin-off? Let's understand. Spin-off to the Hindenburg report is corporate governance. Spin-off is corporate governance. So this Hindenburg research for you is not important because it's political in origin, but it becomes important to understand what is corporate governance. That's the part of your GS2. पर वो आपको कैसे पता होगा? अगर आपने सिलेबस पढ़ा हुआ है, if you wrote learn the syllabus, तो आपको तुरंत दिमाग में आएगा, हाँ, there is something called corporate governance in my syllabus. It means this news is political, not important, but the dimension of corporate governance is important. सबको बात समझ में आ रही है? तो these are आपको पूरा एक एक लाइन एक एक वर्ड रटना है. एवरी सिंगल लाइन यू मस्ट रॉट लर्न. उसमें जो भी एक एक वर्ड लिखा है आपको पूरी लाइन रॉट लर्न करनी. प्लीज कीप इन माइंड यूपीएससी डज नॉट गो आउटसाइड ऑफ द सिलेबस, बट इट एक्सप्लोर डायमेंशंस. जैसे इस बार एक क्वेश्चन था मेंस में, दे आस्क्ड द क्वेश्चन लिंकिंग गवर्नेंस विद एनवायरमेंट. एनवायरमेंट यू स्टडी इन GS3. द क्वेश्चन केम इन GS2 in governance chapter. So they interplay two subject, GS2 and GS3 को interplay करा and they've asked the question. That's how UPSC play. State services are static. वो तो जमाने से चले आ रहे हैं. UPSC always innovates sometimes. Clear? So first thing you need to keep in mind, draw to learn the syllabus stage 1. Stage 2 में few key rules of current event. First is nothing political. मान लेते हैं राहुल गांधी said something to Modi ji. Modi ji said something to Rahul Gandhi. Mamata Banerjee said something to something. Not important at all. Do not waste your brain cell in reading that. ऐसी न्यूज को you will not even touch. But हाँ, why I'm saying this, because if you look at YouTube में the edtech platform that are there, वहाँ पे वो यही explore करते हैं. फर्क समझिए, there is a difference between YouTube and the coaching institute. YouTube is runs on audience. Their money comes by audience capturing. If you will watch the video, they will get the money. So they always pick the topic that is sensational, not important. हाँ, उनके पेड कोर्स ठीक होते हैं. The free content on YouTube is sensational, not important. अब गांधी गॉडसे की बात आएगी तो you will be encouraged कि यार कुछ तो है इसमें, let's see. You will waste half hour, 1 hour in reading, watching those videos. But UPSC will never ask. I can give you in guarantee UPSC will never ask any question on Godse. Why? Because it's a political issue. And UPSC में समझिए फर्क. Even people sitting in UPSC, they like their job. They like their freedom. They will not write a question that will land them in jail. Common sense लगाइए. They are also government servant. They know how government functions. आपको ethics में जब आप पढ़ेंगे बताया जाता है, a government servant must always be neutral. चाहे कांग्रेस बीजेपी की हो, चाहे गवर्नमेंट बीजेपी हो, कांग्रेस हो, यू मस्ट बी न्यूट्रल, यू मस्ट बी फॉर द पीपल. तो उस थिंकिंग से चाहिए. द एग्जामिनेशन इज फॉर एडमिनिस्ट्रेटर सिलेक्शन. इट इज नॉट बीजेपी एग्जामिनेशन और कांग्रेस एग्जामिनेशन दैट दे विल आस्क राइट एंटीथीसिस ऑन गोडसे. कांग्रेस में आस्क यू, ठीक है, बट यूपीएससी विल नॉट. बात क्लियर है सबको? फर्स्ट पॉइंट इज नथिंग पॉलिटिकल, बट स्पिन ऑफ्स आर नेसेसरी. Spin-offs means if an event happened, you need to understand of your syllabus. In Hindenburg is political, UPSC will not ask, but it can ask about corporate governance. तो अगर if you find this year a question on corporate governance, तो ऐसे मत सोचिए कहाँ से आ गया, नहीं, यहाँ से आया. They got inspired by Hindenburg. उनको लगा होगा कि आप सबने Hindenburg पढ़ा होगा. It was so popular in news. So because of that, you must have read about corporate governance also. Clear? That's what we have to achieve. Second thing, this is something that I have made. Any news that is repeated more than 4 times in a newspaper. Second key criteria is any news that is repeated more than 4 times in a newspaper is must go. Must go का मतलब, if it is more than 4 times, then you have to read that news in detail. जैसे मान लेते हैं गवर्नमेंट brings a policy on investment. You see
For 3 days there were editorial on investment policy. तो इसका मतलब it is important. अगर important नहीं होती तो paper would have not wasted so much of space. वो भी 3 editorial directly on investment. Means they think something about it, and it means UPSC thinks something about it. Because UPSC जैसे आपने कहा पुतिन ने ट्रम्प को एक्सरसाइज किया वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर पुतिन ने बाइडेन से इसी पॉलिसी के ऊपर बात करी वो इम्पोर्टेंट, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है. Policy is important. Think like an administrator. If Rahul Gandhi slangs Modi ji, I don't care. But if Rahul Gandhi says that Modi ji's government is for 2 people, then it is important. Because it is corporate governance. बात समझ में आई? That's why I said first stage है not learn the syllabus. Without syllabus, you will not know, or you can spend 1 year in coaching, then you will know. Both process will work. Either spend 1 year and then you will know what is important, or at least you can not learn the syllabus to have a broad framework. ठीक है? 2 points are clear. If our news is repeated more than 4 times, it is important. You have to cover in detail. If there is some news, मान लेते हैं, even if a policy, मान लेते हैं government brings a defense procurement policy, DPP. It came in a very small corner in newspaper and never repeated more than once. Not important. So what you will do, because UPSC may ask, I'm giving you a key rule to cover 99% subject. Do not waste your time. So what you will do, because you know DPP is a part of syllabus as defense procurement policy, and policies are the part of syllabus. GS में आपका है government intervention in various sectors of economy. So you got the point, but it is not important because it was not repeated more than once. It was in a small corner somewhere. But you know it is linked to your syllabus. So what you will do? You will create a short para on this only. A news that is not repeated more than once, that becomes your third rule. Space is not there. आप लिख लेना है अलग से. This is your third rule. Third rule is a news that is not repeated more than once, or repeated but in a small column and forgotten. So for that you have to prepare a short para only. ताकि अगर God forbid UPSC may ask something, तो you will have sufficient of the short para by which आराम से आप 100 मार्क्स का around 100 to 150 पर आप आराम से expand कर लेंगे. Because you have to write intro, then body, उसमें भी various dimension, then conclusion. आप easily लिख देंगे. तो लीव नहीं करना चाहिए. बट ये कैसे पता लगेगा? फिर वही बात पॉइंट आता है हमारा सिलेबस. Everything I am talking about current event, but all the subjects are linked to your syllabus only. Without knowing the syllabus, you cannot know what is being taught. और इससे एक और फायदा, you can keep accountability of your teachers also. नहीं, it's a need. अब वो कुछ भी पढ़ा रहे हैं, हम कुछ भी पढ़ा के निकल जाएंगे, तो आपको कैसे पता लगेगा सही पढ़ाया गलत पढ़ाया? If you not learn the syllabus, then you can know कि सर आपने ये लाइन तो पढ़ाई नहीं syllabus की, कहाँ है ये लाइन? Got the point? You can also ensure their accountability. And most important, I told you, you live in the age of information, but you also live in the age of information confusion. आप एक चीज सर्च करिए, इतने आर्टिकल मिल जाते हैं, you will be drowned. क्या पढ़े क्या ना पढ़े. Got the point? उसके लिए you need to selectively pick. Clear है? So 4 times. Abhi we will take examples. We will look at the paper and see how we should have covered. यहाँ तक points clear है? Nothing political, but spin-offs are necessary. 4 times, more than 4 times a news, very important. Detailed analysis must be covered. A short para if the news is not covered more than once. So these are some key rules that everyone must keep in mind, and which of course will help you. Again, these are key rules. इसका मतलब ये नहीं they are the ultimate truth. ठीक है? But they nonetheless help. यहाँ तक clear है? So once you do, these are the 2 stages. Keep this in mind. Then you come to the stage 3rd, which I believe is even more important. That is integration. यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आती है. The stage 3 is integration of current event into syllabus. मान लेते हैं you have studied about governor, powers of governor. Polity में आता है. From the syllabus you know governor is something. You have studied something about governor. अब the question में comes is, एक न्यूज आती है कि तमिलनाडु गवर्नर held a meeting with administrators, IAS officers now.
अब आपको उस न्यूज को इंटीग्रेट करना है इन योर सिलेबस, इन योर सब्जेक्ट. तो व्हाट यू विल डू, यू विल पिक अप योर नोट्स. वहां पे यू विल फाइंड वेयर आई हैव रिटन गवर्नर. यू विल गो टू द गवर्नर टॉपिक. यू विल गो, if you have revised it fine, अगर नहीं तो at least a glimpse is necessary. Once you have done, then you can put a small case study. आपके नोट्स अगर मान लेते हैं you have 3 pages of governor. I always suggest whatever subject you are studying, polity, economy, whatever, after every topic leave a space because you are making a hands note. अगर if you, a lot of students what they do, लिखते चले जाते हैं. A topic is covered, governor is covered, leave a page. जहां भी खत्म हो leave it. Start next topic from new page. That is Council of Ministers. इससे क्या होगा, whatever happens to governor, you can add rightly there. Do not, this stage I am talking about, so that you do not treat current event as a separate subject. बहुत से लोग current event को separate subject मान के बैठते हैं कि भाई ये तो separate subject है, I will do it later. And then you have this much of books, करंट इवेंट की मंथली, ईयरली, पता नहीं कौन कौन सी, ठीक है, मैगजीन्स. एंड देन यू व्हेन यू आर एट द एंड पॉइंट ऑफ प्रीलिम्स और मेंस, तब आपको समझ नहीं आता इसे पढूं या इसे पढूं. तो बेस्ट क्या रहेगा, अवॉइड दिस मच ऑफ स्टैक ऑफ बुक्स बाय इंटीग्रेटिंग द रिक्वायर्ड कंटेंट इन योर ओरिजिनल नोट्स. व्हाटएवर इज टॉट इनटू यू इन क्लास, दैट इज योर बेस एंड यू हैव टू एडिट दैट. हाउ, कोई बुक पढ़ी, put whatever you find ki this was not taught to me, this is a new point I could not find. Yeah, you have taken a test me, you find a new point you could not have think from that direction. So what you will do, you will pick that point and put in your notes rightly, and then you will throw the test. So 100 pages long, 100 question long test is worthless now. Throw it out. You have a concise note. आपको बात समझ में आ रही है? You have to integrate subjects now. Your main is class taught subject is your base, and then you will integrate from a book, from current event series, from your test series. जहां भी कंटेंट मिलता है अपने नोट्स में you keep on editing, so that when you are at prelims, 2 months are left, you are at mains, 4 months between prelims and mains, you have only one book to study. Abhi you have 4 books to study, then you have only one book. It will save your time in revision. Keep this in mind. Right now you have a lot of time. At that point of time आप पे टाइम नहीं होगा. उस वक्त you will find escape routes कि यार 2 बुक है, ये पढ़ लेता हूँ, ये छोड़ देता हूँ. और उस वक्त क्या होगा, आप पे एक ही तो बुक है. आई एम टॉकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रिवीजन. बात क्लियर हुई? तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज, इंटीग्रेशन ऑफ योर कंटेंट. इसके लिए आई सजेस्ट कीप ओनली वन बुक. इसके लिए व्हाट यू विल डू, कीप योर नोट्स एज द बेस एंड देन कीप ऑन अपडेटिंग दिस. अपडेटिंग दिस के लिए यू कैन यूज करंट इवेंट मैगजीन्स, आपका टेस्ट सीरीज, यू हैव फॉर एग्जांपल, और क्या बचा आपके पास, कोई बुक, सम बुक you have read. For example, you did polity and you read Lakshmikant. You will not keep Lakshmikant as the base. You will keep your notes as the base, and you will pick content from Lakshmikant, write in your notes right now, and then throw Lakshmikant in the dustbin. That is not longer important. But is important the knowledge. I always say book is not important, the content in the book is important. Book को आप फेंक सकते हो. बात क्लियर सबको? Online people, is it clear to you all? ठीक है, तो these are the 3 stages that you all must follow, which kind of create a ground rules, and as you will go forward तो आपके और काम आ जाएगा. ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं how we should have covered news. Let's see some news. सुप्रीम कोर्ट के सारे जजमेंट यू हैव टू कवर, बट अगेन कहाँ कवर करना है, किस जगह. जैसे आपने यू हैव डन फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट गेव अ जजमेंट, कैसे हम कवर करते हैं. मान लेते हैं यू हैव फाइल्ड अ केस ओवर मी, किसी भी तरह का पर्सनल डिस्प्यूट है हमारा, ठीक है, यू डिड नॉट लाइक माय वॉइस, तो यू फाइल्ड अ केस ओवर मी. इफ सुप्रीम कोर्ट सेज समथिंग इंपॉर्टेंट इन आवर केस, तो यू विल रोट दैट केस. केस कुछ भी हो सकता है, नॉट इट इज नॉट नेसेसरी इट इज अ केस अगेंस्ट द गवर्नमेंट. इवन पर्सनल डिस्प्यूट्स में new concepts evolve. There, for example, Ashok Hurra case, that was a dispute between husband and wife. In that, Supreme Court evolved a new idea of curative petition. It became the part of the syllabus.
रेलिवेंट होगा अगर उसमें सुप्रीम कोर्ट हैज टॉक्ड अबाउट फॉर एग्जांपल लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल टू चूज देयर फूड, ऐसा कुछ उन्होंने इस्तेमाल किया है तब इंपॉर्टेंट। अगर प्योरली कमर्शियल है तो सब इकोनॉमिक डिस्प्यूट दे कैन हैंडल दिस। बात समझ में आ रही है? और आपको कैसे पता लगा? फिर वही पॉइंट आता है, आपका सिलेबस आपको पता होना चाहिए। विदाउट दैट यू कैन नॉट डू सर। अब लेट्स सी, दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर एंड हाउ टू जूम इट। चलता कैसे? अच्छा नेक्स्ट, अब जूम नहीं होगा इसमें। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी दिस न्यूज, आई होप यू कैन सी द वेरी स्मॉल। भारत जोड़ो यात्रा हैज गिवन एन अल्टरनेटिव विजन ऑफ पॉलिटिक्स, राहुल गांधी। डू यू थिंक इट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर योर सिलेबस? पॉलिटिकल न्यूज यूपीएस, इट इज स्पाइसी, इट इनसाइड द माइंड, मजा आता है ऐसी न्यूज पढ़ने में, बट सेल बर्बाद नहीं करने, वी डू नॉट हैव टू वेस्ट आवर सेल्स। तो ये न्यूज हमारे काम नहीं आएगी। बट अब इसमें क्या होगा? स्पिन ऑफ। स्पिन ऑफ क्या आएगा? इन योर GS1, इफ यू हैव नॉट लर्न द सिलेबस देन यू नो GS1 में देयर इज समथिंग कॉल्ड सोसाइटी एंड GS2 में समथिंग कॉल्ड गवर्नेंस। इन दोनों में आपको समझ में आएगा व्हाई ही इज टॉकिंग अबाउट अल्टरनेटिव विजन ऑफ पॉलिटिक्स, यानी कि अल्टरनेटिव विजन ऑफ गवर्नेंस। उसके लिए आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द करंट मॉडल ऑफ गवर्नेंस। फिर आप क्या करेंगे? इसमें आपको सब कुछ नहीं मिलेगा, इट विल ओनली गिव यू अ पॉइंट, देन यू विल सर्च, क्योंकि बिकॉज यू हैव नॉट प्रिपेयर कंटेंट। यस, फिर आप गूगल करेंगे व्हाट इज द करंट व्यू ऑफ पॉलिटिक्स, तब आपको पता लगेगा समथिंग कॉल्ड एज न्यू लिबरलिज्म, दिस गवर्नमेंट इज न्यू लिबरल, देन ही इज टॉकिंग अबाउट सोशल लिबरल, ही इज टॉकिंग अबाउट सोशल लिबरलिज्म एंड द करंट गवर्नमेंट इज न्यू लिबरलिज्म। तो ये जो बदलाव है ये यहाँ नहीं मिलेगा आपको, बिकॉज अगेन आई एम टेलिंग यू न्यूज़पेपर आर नॉट रिटन फॉर यू, दे आर रिटन फॉर कॉमन रीडर। यू हैव टू एक्सट्रैक्ट द कंटेंट दैट सेटिस्फाई योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उड़ीसा मिनिस्टर शॉर्ट दैट, ये तो आप छूटते ही नहीं पढ़ेंगे। शिवपाल काम की नहीं है। सेंटर सीक्स गेटर, ये काम की है। देखिए क्या लिखा है इसमें, Chief Minister seeks center help for greater sharing of water, and you immediately will click. There is something called as interstate disputes. GS2 में Polity में you have interstate disputes. So this news is important. But again, the content here written here may not be important. उसके लिए सबसे बड़े तरीका मैं आपको बताता हूँ. Whatever you study here, there's so many portals online ना. You will immediately search dispute of water between, किसके बारे में बात हो रही है? गंगा यमुना की बात है. You will immediately search Delhi's requirement of Ganga Yamuna. उसके बाद आपको लिखना है UPSC. You will search on Google Delhi's case of Ganga Yamuna UPSC. There will be so many institutes article, कोई भी पढ़ लेना. ये बेकार है. यहाँ पे there will be too much political nuisance. हमें नहीं चाहिए. UPSC because all the institute they publish content relevant for UPSC. Topic यहाँ से मिला, content वहाँ से, and then you will what you will do, integrate. Wherever you have written interstate disputes, there you will put this case. तो क्लियर हुआ how you have to cover this? Next देखते हैं. Hindenburg report driven by ulterior motive से अडानी. हमें कोई परवाह नहीं अडानी ने क्या बोला. अब लेकिन I told you every political news has a spin off. यहाँ पे spin off क्या है? यहाँ पे spin off है nationalism. This entire debate is on nationalism. Adani is using nationalism. Hindenburg report attacked Adani and he is saying you are attacking India. तो अब यहाँ पे आपको समझना है स्पिन ऑफ है डिफरेंशिएशन बिटवीन नेशन एंड नेशनलिज्म। तो फर्क होता है वो तो, बट wherever you will study GS and IR, when you will study you will get to understand the difference. For example, criticizing Pradhanmantri Modi does not become criticism of government of India, does not become criticism of Bharat Mata. Similarly, criticizing Adani does not become the criticism of India. He is not India. He is a person, somebody else will be there. ये आपको समझना पड़ेगा because it is linked to what? Article 19, freedom of speech and expression. So the attack on Hindenburg is the attack on freedom of speech and expression. You don't like their report, publish a counter report. और ये आपको डेटा कहाँ मिलेगा? यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ पे बकैती होगी. What you will do? You will immediately search Hindenburg report UPSC. हर चीज में आपको बता रहा हूँ, गूगल पे जाइए और यूपीएससी लिख दीजिए एंड में. यू विल गेट सो मेनी आर्टिकल्स ऑफ इंस्टीट्यूट एंड यू कैन चेरी पिक कंटेंट. एक बार पढ़ना है सिर्फ. यू विल गो वंस, यू विल एनी कोई भी इंस्टीट्यूट मिलेगा, एक्सेस दैट आर्टिकल, रीड इट वंस, एक्सट्रैक्ट द कंटेंट इंपॉर्टेंट फॉर यू.
and then never again visit that article. जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको. बात समझ में आ रही है? And you have to write where? In your original notes, so that when you have to revise, you have one comprehensive book to revise rather than multiple books to revise. ठीक है, और देखते हैं कौन सी न्यूज है. ये इसमें देखिए डेटा है, तो एजुकेशन डायरेक्टली आपके सिलेबस में है, बट ये न्यूज डायरेक्टली रेलिवेंट नहीं है, बिकॉज यूपीएससी डज नॉट केयर अबाउट डेटा मच, बट यू नीड टू नो स्टूडेंट एनरोलमेंट इन हायर स्टडीज रोज बाय 7.5% इतना, तो इट्स जस्ट अ लाइन. यू विल कीप ओनली दिस लाइन इन योर नोट्स. बाकी आपका नोट्स में ऑलरेडी होगा. यू नो व्हाट इज द प्रॉब्लम इन हायर एजुकेशन, व्हाट इज द गवर्नमेंट ट्राइंग, व्हाट इज नॉट ट्राइंग, तो इट्स जस्ट द डेटा. ये सारा नहीं पढ़ना, हमारे काम का नहीं. वी आर नॉट रिसर्चर हियर. You will keep just one line. Enrollment in higher studies is increasing. बात समझ में आ रही है? Rest is, that's why you have seen, जो actually क्या होता है when you have yes Shivam two finger judgment जो है वो important है, because that is directly linked to personal privacy, and we all know right to privacy is a fundamental right, Article 21, so that's important. इसीलिए if you have seen the people who spend 1 or 2 years in preparation ना, they read newspaper within an hour or sometime half an hour. जो नए बच्चे होते हैं they take 1 day to read 1 newspaper. ये फर्क कहाँ से आया? फर्क इसलिए आया because the person who have studied, he knows everything already. जैसे न्यूज मान लेते हैं, जैसे न्यूज आएगी repo, and RBI has increased repo rate. A new kid will read everything. What is repo? How it is linked to monetary policy and all. The person who has spent 2 years in preparation, he knows everything about repo. He will just pick this line, RBI increased repo, bus, and he will move on to the next page. That's how you spend hours, and that person spend minutes. और इसलिए मैंने बताया starting point is learn the syllabus. It will help you. Or you can spend 1 year in preparation, then you can study current event. दोनों will work properly. ठीक है. अगर देखते हैं जेडीयू चीफ, बिहार डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अटेंड केसीआर इवेंट. मैरिज क्या लिखा है? मिराजेस ब्लैक बॉक्स. स्पोर्ट्स नहीं पढ़नी, यूपीएससी नहीं पूछता. स्पोर्ट्स आर इरेलेवेंट फॉर until unless if say for example some significant event happens, क्योंकि गवर्नेंस इज अ टॉपिक. जैसे मान लेते हैं गवर्नमेंट ब्रिंग्स अ सिग्निफिकेंट पॉलिसी, जैसे अभी जो हो रहा है currently the woman who have levied allegation against that person. इस केस में political news not important, but spin-off is important. Spin-off is government intervention in sports. तो उसके लिए you have to cover 1 or 2 scheme. What are government scheme? What is the problem with sports infrastructure in India? 2 or 3 point. At most you need 2 pages and you are done. Sports relevant नहीं. करंट इवेंट्स के अंदर अगर हमारे प्लेयर्स को कोई नया रिकॉर्ड वगैरह बनाए तो वो करंट अफेयर के पार्ट के अंदर यूपीएससी पूछ सकती है या नहीं पूछती. यूपीएससी स्पोर्ट्स को कभी नहीं पूछती. हाँ, बट इंटरव्यू में इफ यू हैव समथिंग इन योर रिज्यूम रिलेटेड टू स्पोर्ट्स तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं पढ़ना, मींस के बाद पढ़ना. नहीं, इंडेक्स वाटर ट्रीटी वैसे भी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली आपके सिलेबस का हिस्सा है वो तो आपका. पर इसमें देखिए, इसमें द थिंग इज यू विल बी कवर्ड एवरीथिंग. इंडेक्स वाटर टीटी में यू विल ऑलरेडी कवर एवरीथिंग इन आईआर. ऑल यू हैव टू पिक इज चेंज. व्हाट हैज चेंज्ड इन आईडब्ल्यूटी? समथिंग. ठीक है, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आईआर में अ लॉट ऑफ आवर स्टेटमेंट, हम कुछ कहते हैं, दे से समथिंग, वी कीप ऑन डूइंग दिस. इज देयर एनी चेंज इन द टीटी? इफ then you will cover, and I'm guaranteeing you if IWT में there will be any change, it will be covered for entire week. Very important TT है वो, एक दिन में नहीं खत्म होगी. It will be covered in detail. So you have to cover in detail IWT. Anyway, it's very important nonetheless. So I hope this page is done. Next page देखते हैं. Let's look. इसमें कोई मुझे बता सकता है which news is important? यस, ये वाला आपका इंपॉर्टेंट है फॉर इंटरस्टेट डिस्प्यूट. हमने पहले भी समझा था, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट में आ जाएगा, बट इसमें अ लॉट ऑफ थिंग्स आर रिटन इन डिटेल. इतनी जरूरत नहीं, बट यू विल डू. एक बार पढ़ के देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है इसमें. It is written, Chief Minister Arvind Kejriwal on Sunday sought the center's intervention to ensuring the capital get more water from Ganga and river.
तो गंगा एंड यमुना की इसमें बात हो रही है. फर्स्ट थिंग, नो मैटर हाउ मच वाटर वी स्टॉक, वी नीड बेसिक यूनिफाइड अमाउंट एज पर. ये सब बेकार है. इसमें कुछ भी आपका काम का नहीं आएगा. इसमें whatever data and whatever arguments written here and there argument है. हाँ, but if you belong to Delhi, then you have to cover this data. This data of economic survey finding is there. Small para. You have to cover this data if you are from Delhi, because that will be asked surely in interview. Then you have to cover this data, but if you are not from Delhi, do not cover this. But you need to know what is interstate water dispute. Political news not important, but spin-off is important. What is the spin-off? Interstate water disputes. There, if required, you can put at least 1 or 2 point about this. कि Delhi is also fighting over the water of Ganga and Yamuna with Haryana, Punjab, जो भी states. ठीक है. तो mercury dips below. Mercury dips below, इसमें कोई नहीं है. Court issue directives to engage paralegal volunteer to trace missing children. Nothing is important. Next page. कोई important है इनमें, इन तीनों में से कोई नहीं important है. Murmu. President, she is president, and she is actually statement है. She is a statement that even tribal can become president. Assam government shift 68 foreigners to new transit camp in name of Shipal Maurya. BJP survey on. कोई news? Any important one? This is news important because मैं budget के बारे में, budget is the part of the syllabus, but this is a dispute between governor and the chief minister. इसमें बात हो रही है कि the governor से वो बोल रहे हैं they should approve the state budget which is going to be presented in the first week of the February. बजट में इसके लिए आपको पता होना चाहिए how budget works. तो spin off क्या होगा इस न्यूज़ का? Budgeting. Then you will immediately go to your polity syllabus and you will see कहाँ पे मैंने budgeting लिखा है. How budgets are prepared, how they are passed, what is the process, what is the role of governor in the budget. What is the role? किसी को idea what is the role of governor in the budget? President का क्या रोल होता है? Yes, speech देता है. He introduced, the finance minister introduced the budget on behalf of the president. It is assumed president is presenting the budget. तो वो रोल है, उसी की बात हो रही है यहाँ पे. So this much you know, then you will discard this. You will not pick even a single point out of it. Article 112. बजट से आर्टिकल 112 बजट का आर्टिकल ही तो है वो, दैट इज एनुअल स्टेटमेंट. आपने पॉलिटी में कवर तो किया होगा, उसमें यू हैव कवर्ड कि व्हाट इज द रोल, व्हाट इज बजट, हाउ इज इट प्रेजेंटेड, व्हाट आर द कंपोनेंट्स, हाउ इट इज एवरीथिंग, वहां पे है. यू विल रीड दिस अप क्विकली एंड सी इफ देयर इज एनी न्यू लाइन. इसमें पूरे में न्यू लाइन नहीं है, सिर्फ एक चीज है, दे आर आस्किंग गवर्नर टू अप्रूव द बजट. This is, you already know, governors approve the budget at the first sitting. The president approves when it moves to parliament. Clear? Next देखते हैं. ये तो कुछ भी नहीं है. अडानी जी का एड भी आया हुआ है. ठीक है. So editorial. Whether you read the newspaper or not, read the editorial. इसके लिए I will suggest, if you do not like reading newspaper or you are unable to make sense even today, तो मैं आपको suggest करूंगा, take any magazine. किसी भी इंस्टीट्यूट से, all institute more or less write the same magazine. All institute more or less like the same magazine. किसी भी इंस्टीट्यूट से, whichever you like, you can take their magazine. I would suggest take weekly or monthly. Annually मत लेना. Annually you won't be able to cover. हाँ, current affairs की. Take any institute, whichever you like, whatever is up to you, weekly or monthly magazine for everything relevant for UPSC.
कई इंस्टीट्यूट वीकली भी देते हैं, हमारा भी देता है, और भी कई इंस्टीट्यूट वीकली भी पब्लिश करते हैं. इफ यू लाइक वीकली, फॉर एग्जांपल इफ यू लाइक कवरिंग इन पीस मील, वीकली बेटर है, बट इफ यू थिंक आई कैन कवर इन बल्क तो मंथली ले लीजिए, एनुअल मत लीजिएगा. So this you can do, and if you are taking these two things, any of these two things, then you do not need to read newspaper at all except editorial, because ये आपके लिए सब कुछ कवर करके देंगे. One stop source for everything. Then you have to cover only one thing, editorial. सर ये मंथली मैक्सिमम उसकी आती है डेली एक्सप्रेस की. वो एक्सप्रेस यूपीएससी के लिए आती है. सॉरी, मंथली मैगजीन है. वीकली मैगजीन पोर्टल पे है तो हाँ, वीकली मैगजीन पोर्टल में मिलती है आपका, मंथली मैगजीन आपको वैसे मिलती है, और एनुअल पब्लिश होती है तो एट टू यू. अब इसमें देखिए पहला क्या है, इन नरेगा रिफॉर्म्स प्रायोरिटाइज द वर्कर एंड हर ड्यूज. नरेगा यू ऑलरेडी नो, इट्स अ ओनली राइट टू वर्क गारंटी इन इंडिया. और एडिटोरियल आई एम टेलिंग यू विदाउट एनी थिंकिंग, यू कैन ऑलवेज रीड एडिटोरियल. एडिटोरियल करना ही करना है, चाहे वेदर यू रीड न्यूज़पेपर नॉट, एडिटोरियल इज अ मस्ट. एंड एडिटोरियल में सेलेक्टिव, अगेन आई एम सेइंग, सम स्टूडेंट व्हाट दे डू, वो काट लेते हैं, कट द पीसेस एंड कीप इन द, जहां भी वो काम लिखा होता है, कोई फायदा नहीं होगा यार. यहाँ पे आई डोंट नो हाउ मेनी वर्ड, दिस 2000-3000 वर्ड, आई एम गारंटिंग यू इसमें तो मुश्किल से यू रिक्वायर 20 to 30 पॉइंट्स, 20 to 30 sorry words. Beyond that, this article is nothing for you. Means you have to summarize editorials. How would you keep so many editorials with you? Summarize them, extract the content and integrate. That's why I'm saying the third stage is very important. Integrating with the original content. That is your base notes of the classes. अब देखते हैं जल्दी से, लेट्स सी इसमें से क्या रिकवरेबल है. लेट मी ट्राई फर्स्ट. The Manrega Act, इसके लिए you must have covered Manrega somewhere in governance or something. You will immediately open Manrega. Then quickly you will read. देखिए इसमें एक टर्म आई है, there's a term here, regressive spending pattern. A term that he has used, regressive spending pattern. तो आपका पहला पॉइंट क्या बनेगा? What you will expect? The scholar name you must keep in mind. इसमें scholar name है संघर्ष मोर्चा, नहीं scholar name नहीं है. So Manrega में you will write, the heading will be issues. How will you will make notes? Issues in MG Narega, Manrega. Point number 1 is regressive spending pattern. No detail, just a line. What is regressive spending pattern? देखते हैं क्या है ये रब होता है. ठीक है, what is regressive spending pattern आ गया. And you're done with this art, with first para. Regressive spending pattern means the fund spent by the poor state is less than the rich state. So you will keep a line, जो भी इसने लिखा है. What is regressive issues with Manrega? Point number 1, regressive spending pattern. Hyphen, the money spent by poor state is less than the rich state. तो नुकसान आप समझिएगा, poor state need Manrega more and they are spending less. पहला फर्स्ट इशू यू हैव कवर्ड. जल्दी से लेट्स सी. बेकार है. अच्छा, बाकी सजेशंस है. इट हैज टॉक्ड अबाउट वन इशू, रेस्ट इट हैज टॉक्ड अबाउट सजेशंस, व्हाट वी कैन डू, एंड इट हैज टेकन अ केस स्टडी ऑफ बिहार. सजेशंस देखते हैं व्हाट ही हैज सेड. फर्स्ट ही हैज सेड इज delays in wage payment. So first suggestion is there should be suggestions. Then you will write suggestions. Number 1 is no delay. No delay in wage payments. बाकी सब ऐसे ही हैं. हाँ, इसमें लिखा है
We know this. I know. I'm saying we already know a lot of things. The point that we do not know, because we are integrating the content. The point that we do not have covered, we will pick those points from here. बाकी we will discard. So we know increase the expenditure. तो वो point तो यहाँ से हमें फायदा नहीं होगा. We'll pick only one point. No delays. If we have not written that point. अगर you have written that point in your content, तो वो भी नहीं pick करना है यहाँ से. Quickly move on. तो यू हैव, अगर मान लेते आपने ये लिखा हुआ है तो यू विल कवर ओनली वन पॉइंट. सो फार आउट ऑफ दिस मच यू हैव टेकन ओनली वन लाइन. दैट्स हाउ यू रिड्यूस. सेकेंड इसने नो डिलेज के लिए इसने सजेस्ट क्या किया, नो डिलेज. फॉर दैट इट हैज सजेस्टेड रिड्यूसिंग द लैडर ऑफ अप्रूवल. इट इज सेइंग कि अप्रूवल के लिए 6 से 7 स्टेज लगती हैं. द अप्रूवल रिक्वायर्स 7 to more stages. We have to reduce that. So you will condense that and write reduce stages of approval. ये क्या हो गया? Anyway, ठीक है. So this much we have extracted. The second point, तो देखिए out of from here to here we have extracted only 2 lines. This is we will do with entire article. At most I am telling you, you will get only 4 lines at most. Sometimes you may not have, मान लेते हैं you have never covered मनरेगा, so then you may get more lines. Otherwise if you have covered that topic already, you will not get more than 4 lines out of it. So keeping 200 or 1000 words of article and keeping 4 lines, which is easier, 4 lines, and that too in your language, and that too at one place. So when you will be revising before prelims or before mains or before interview, it will be very quick. Rather than again, देखिए अभी एक बार आप पढ़ चुके हैं. If you will revise it again, you will read this entire 2000 word again. It will serve no purpose. Better ये रहेगा integrate this. बात समझ में आई सबको? Online people, is it clear? Detailed newspaper analysis good or bad? Detailed newspaper analysis नहीं करना है. We have to cover what is necessary for us. देखिए I have told you, you have limitation of time. पहली चीज यूपीएससी अंडरस्टैंड्स दैट. ठीक है. दैट्स व्हाई आप मार्क्स देखिए, इफ यू आर स्कोरिंग 100 इन जीएस, 250 अराउंड वर्ड, 250 मार्क्स, यू आर स्कोरिंग 100 अबव, यू आर टॉपर. नोबडी स्कोर अबव 100 मार्क्स इन अ जीएस. तो यूपीएससी को भी पता है, यूपीएससी के सबको पता है कि किसको क्या पता है. ठीक है. और द क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन. आई एम टेलिंग यू, देखिए दिस एंटायर एक्सरसाइज वी आर अंडरस्टैंडिंग फॉर द पर्पस ऑफ बेटर रिवीजन. Rather than revising from 4 sources, reading your notes, then reading Lakshmikant, and then reading Current Event magazine. 3 sources को revise करने में you will spend 3 times the time. But if you have all the 3 at one place, you will spend half an hour for which you are spending 3 hours. And the time between prelims and mains, 4 months, you will revise at least 4 to 6 times your entire syllabus if you have everything at one place. If you have distributed multiple place, तो क्या है फिर? कुछ नहीं, next year हाथ टेपने के काम आएगा. ठीक है. क्लियर? आगे देखते हैं. अब लेट्स सी व्हाट इज द सेकंड सजेशन ही हैज गिवन. सेकंड सजेशन इज सिंपल. ही हैज सेड स्ट्रेंथन द कैपेसिटी वेयर इज वीक. मतलब द स्टेट व्हिच आर वीक is strengthen their administrative capacities. The second point will become strengthening administrative capacity. बाकी सब छोड़िए. Second problem it has listed is problem with SCs and ST getting employment. Second problem. First problem is regressive pattern expenditure, for which you have picked the line, for which he has given some suggestions. Second problem he has listed SC/ST, means caste based deprivation. For what we can do caste based deprivation? ठीक है. He has suggested कि the panchayat and villages
where the payment is less than the average. You fix an average. If the payment is less than that, you will initiate in the investigation. मतलब you will focus on that block. Why the payment here was less than the average. उसके base में whatever reasons you found, you can take counter action and include them also. Got the point? How we will cover? Clear? तो क्वेश्चन किसी के माइंड में बताइए. तो उसके लिए आपको एक तरीका करना है बच्चे. आई ऑल्सो ट्राई दिस इनिशियली. देखिए सी सेट आप लोग प्रिपेयर करते हैं क्या? हाउ टू है? One year is more than sufficient, Shivam. 1 year is more than sufficient. Anything that is important will be within 1 year. First thing याद रखिए. Second thing, do not prepare. Leave everything before 2 months of prelims. Everything. कुछ भी नया नहीं पढ़ना है. I know we have a fear. एक fear होता है psychology में, FOMO, fear of missing out. आपको लगेगा I may be missing a point. इसी में क्वेश्चन आएगा और मैं 1 मार्क से रह जाऊंगा. ठीक है, ऐसा नहीं होता है. हो भी सकता है. आई एम नॉट डिनाइंग इट. हो सकता है, बट उस 1 मार्क को कवर करने के लिए 10 मार्क्स खो दोगे. Cover that 1 mark, but you will lose 10 marks after that. So best I always suggest is before 2 months of the prelims, leave everything. दुनिया में कोई मर भी जाए, यूपीएससी खत्म भी हो जाए, तो भी आप कवर नहीं करोगे. ठीक है. What you will do? Revise, revise, revise and revise. Whatever you have done, believe in your content and revise it. That's why I'm saying all this thing, integration, updation, abhi kar lo. Do it right now. ताकि when you are at the prelims 2 महीने पहले you do not require anything. One book you have already prepared, you have notes, you updated that from a book, magazine, current events, and then you have a single notebook. You will revise that only and thoroughly and multiple times. I'm telling you, you require around, मान के चलिए, to write a mains paper, you require at least 12 times of revision of every single line you have written in your notes. Why? Because you have 3 hours to write 20 questions. 3 hours to write 20 questions. In that, you have to read the question, interpret the question, make the structure, and write the answer. This, I'm telling you, this UPSC exam is easier than bachelor's exam. But difference is time. Bachelor's exam में you have one paper of 3 hours with how many questions? 6 or 7 questions. Options बहुत सारे होते हैं. You have multiple option, or at most you have to write 7 or at most 8 to 9 questions. With multiple option you can pick and choose, and that too one paper in a day. फिर 1 week की छुट्टी, फिर 1 पेपर, जो भी 1-2 दिन की छुट्टी. यहाँ पे प्रॉब्लम टाइम की है. पेपर इजी है, बट टाइम मैनेजमेंट, सिलेबस इज वास्ट एंड टाइम मैनेजमेंट. यू हैव टू राइट 20 क्वेश्चन विदाउट ऑप्शंस. ऐसा नहीं है कि आई डोंट नो दिस वन, आई विल राइट और वाला. नहीं, you have 20 question without option, 3 hours structure, और उसमें साफ लिखा हुआ है if the language, if the writing is not legit, it will not be checked. अगर उन्हें समझ नहीं आया वो काट देंगे. They will not care, कि they will not take the pain of reading the answer. If they could not understand your answer, they will cut it off and 0, 1, 2 जो भी देना होगा. तो ये प्रॉब्लम आता है. It's all about time management. उस वक्त कहाँ क्या चीज काम आएगी? Revision. When you have revised at least 11 to 12 times, then those words are printed in your mind. उस वक्त में क्या होगा? You will immediately keep on linking content. Question पढ़ा, interwater, अच्छा interwater में this suggestion, this scholar, अरे मैं IR में scholar पढ़ा था, ये वाला यहाँ डाल देता हूँ. Got the point? Revision, 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 and that revision will be better when you have only one source to study. Multiple source में आप 12 से 13 रिवाइज नहीं कर पाओगे. At most 6-7 कर लोगे, अलग बात है. I was talking about CSET. आपने इंग्लिश की जगह बात की थी. CSET, if you are very well versed in English, never even singly prepared CSET, because my English पे command is very high. And if you look, if you have seen CSET paper ना, उसमें everything is comprehension. 60-70% paper of the CSET is comprehensions only. So if you know nothing about mathematics and your command over English is like your command over your native language, जो भी आपकी language है, the way you command your native language, if you command English the same way, easily CSET पेपर देखा आप लोगों ने? English
होता है, you do not have proper command. देखिए, thing and having a mother tongue is tongue आप कहीं नहीं पढ़ी, you know the Hindi, then you have to worry about CSET, because a student who prepared for GS will lose in CSET. ठीक है, तो उसे if you have excellent command over English, you do not have to, don't for mathematics, reasoning. Audible? Audible नहीं है. हैं? 24 के लिए आराम से हो जाएगा. नहीं आता. हाँ बिल्कुल सफिशिएंट होगा. किसके लिए? इसके लिए आपको फर्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर, आई टोल्ड यू, एक छोटी सी बुकलेट रखी है अपने पास, उसमें एवरी डे यू विल रीड एडिटोरियल समथिंग, एटलीस्ट 10 वर्ड्स यू विल, जिसका मतलब आपको नहीं पता. क्या हुआ? Am I audible to you people now? Online? ठीक है. So what we have to do English के लिए अभी गई, I believe अभी गई है, कह रहे हो थोड़ी देर पहले करना शुरू किया. So actually I was answering, she was asking about CSET के लिए. What you have to do is keep a booklet, छोटी सी हैंड नोट, जैसे नोट होते छोटे वाले जो होते हैं, उसमें every day you will write around 5 to 10 words and you will rot learn them every second. हर वक्त उसे देखते रहो, हर वक्त उसे देखते रहो. वैक्यूलरी आपकी बढ़ जाएगी तो इंग्लिश बढ़ जाएगी. I'm telling you, vocabulary will improve. You will have words to express. Problem क्या आती है in a language? You know the grammar, but you do not have the word to express. और वहीं आप अटक जाता है. You start thinking you have English problem, you have a language problem. No, you have a vocabulary problem. To study language, the first stage is vocabulary, then comes the grammar. Once you have the word to express ना, आप तोड़ मोड़ के बना ही लोगे. Arrangement अपने आप हो जाता है. लोग ये गड़बड़ करते हैं, they start with grammar then vocabulary, and that's why they achieve nothing. You have to start with vocabulary. You have all the words, then arrangement will naturally be, कहीं ना कहीं तो जुड़ जाएगा. थोड़ा शुरुआत में प्रॉब्लम होगा, but time it will be experience. So first stage is vocabulary, and इसके लिए क्या करना है? Keep 5 to 10 words. Source is this. यहाँ पे पढ़ा, कोई नया word मिला, heavy word. जैसे first word encounter was extravaganza. Extravaganza. I wrote it. I was in college and I read Hindu पहली बार. उसमें पहला ही वर्ड था बड़ा सा हैवी वाला, extravaganza. Is extravagant spending by the union government. बस वहीं पे मैंने पेपर बंद कर दिया. मैंने कहा हो गया, आज का काफी है. ठीक है. So what you have to do is, उसके बाद बताए do is हर पेपर, and I always take note in front पे बैठ के पढ़ता. कीप देता हूँ. उससे सेकंड में मेरी एक साल तक. बिफोर दैट आई एम टेलिंग यू, मैं इंग्लिश में बहुत वीक था. आई एम लिटरली टेलिंग यू, बहुत, बिकॉज़ आई वाज इंजीनियरिंग में इंग्लिश इतना परमानेंट नहीं होता. इट्स ऑल अबाउट स्टेप्स. द मार्किंग दैट यू गेट इन इंजीनियरिंग इज स्टेप मार्किंग. इफ यू राइट 3 or 4 स्टेप यू विल गेट द मार्क्स. उसमें इंग्लिश इज फॉर ह्यूमैनिटी में लैंग्वेज इज क्रिटिकल. टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक वाले सब्जेक्ट्स में
your content is important. You have to make graphs and all. Language is not. Humanities mein language is important because here you have to express yourself. That is something you do not have to do in engineering. अब ये बड़ी प्रॉब्लम है. To switch from engineering, preparing from different mentality to a humanities, expression based understanding. तो उसके लिए शुरुआत में बहुत difficult था. तो I started this process and then English became my natural. बात समझ में आई? Vocabulary से start करना है. From today start with vocabulary, keep 10 words, rot learn them every second. हर 2 मिनट बाद देख लेना है. And you repeat this process for 5 to 6 months. Vocabulary once you have, guaranteeing you English will be your pet language. Comprehension के लिए उसमें comprehension से भरी हुई. Time those हम हिंड love capitalism and you have पूरा आंसर नहीं वो लाइन होगी. Not get your cat there. You can वहाँ पे that works on very
क्वेश्चन यू हैव एक्सीलेंट कमांड. टॉपर का मतलब ओवरऑल इन दैट क्वेश्चन. वो बहुत वेरिएशन होता है. सम पीपल आर वेरी गुड इन ऑप्शनल, बैड इन GS, so their marks get lower, they get out of the list because you could be better in one subject. You love economics is very high, you hate polity say for example, कम मार्क्स आ जाते हैं. एवरेज बनाना पड़ता है. Thought that this person should not be an administrator, he could be dangerous. सकता है उसने कुछ भी बोल दिया. For example, he may have said the right to protest is mental right even if you burn anyone. I'm just saying, ऐसा कुछ बोल दिया हो. He had no bad intention. Slip हो सकता है, उस वक्त प्रेशर बहुत होता है, प्रेशर में बोल गया हो. But that is a personality test. If you have people sitting in front of you, how would you handle? उस वक्त तो you will start उल्टे पाँव भागोगे. Maintain a cool. तो उसने कुछ ऐसा बोल दिया, offended and they gave him 100. The toppers. 180, 70, 80 अगर 160, 70 मिल हाँ बिल्कुल आते हैं. आप उंगली करोगे तो 130 आएंगी. The panel is different, people sitting is different, the question is different. Every person, मैं हमेशा चीज समझाता हूँ, every person asks from their perspective. The way you judge everyone from your perspective. For example, you hate, आपके लिए कोई smoke कर रहा है, that person is a stupid person. That person active person, he's and now evaluation of the experience answers the judgment is final. Keep this in mind. यार we were saying voice heavy है. और उसकी voice heavy के लिए उसे लगता है. The superstar because of his voice now. उसकी voice एक standard है. They judge him based on the perception of what is beauty. Why they are running? Because they hide beauty, and you express the to beauty. वरना सारे तो qualifying on you. क्या आप दुनिया का एक चीज तक टॉप नॉच इंटरप्रेटेड क्वेश्चन रॉन्ग. क्या गलती थी भाई? इंटरप्रेट द क्वेश्चन रॉन्ग. यू वर वेल प्रिपेयर्ड, यू इंटरप्रेटेड द क्वेश्चन रॉन्ग, रॉन्ग आंसर. और व्हाइल राइटिंग द आंसर इन बिटवीन योर माइंड गॉट स्विच. कोई थॉट आ गया आपके दिमाग में, कोई पुरानी बात आ गई, आप स्विच हो गए, एंड योर आंसर गॉट बैड.
50 to 60. Numerous factors हैं यूपीएससी ब्लैंड चीज में हमेशा कहता हूँ करने भी बोली है वैसे बट योर सक्सेस इज नॉट बिकॉज ऑफ योर एफर्ट्स इट्स अ कल्मिनेशन of what you inherit, what you work, and the circumstances you are presented. Modi ji is prime minister because he was born at a fortunate time, the time of rise of right wing. If he would have 47, nobody would have. He was born at a very bad time. That in this time there is a rise of right wing around the world. वरना डोनाल्ड ट्रम्प जैसे नहीं देता ठीक है so he is president he became president of USA not because he is talented talent बिल्कुल फिगर है but उसके जैसे बहुत से लोग talented है became because he was born at a time which is very for his so why again and again take person it's an exam give something हुआ तो इसका कि you could not qualify cannot something ठीक है और न्यूमरस एग्जांपल आपको मिल जाएंगे हु डिड नॉट क्वालिफाई यूपीएससी एंड दे आर नोन वर्ड्स आप सर्च करना बहुत सिंपल है एनीवे प्रेसिडेंट जाना यू विल अपॉइंट द आईएएस यू आर ट्राइंग टू बी ठीक है सॉरी मेंस में यू कैन अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस प्रीलिम्स में जरूरत नहीं है no one I'm taking the topper even knows the 50% rest are intelligent guesses इसके लिए there is a Saturday video in which I analyze a paper and art of intelligent guessing आप पूछना इनसे which is that video please ask them country specific आपको नहीं जाना high court की criteria that she has asked anything in which India is not a party is not your concern अफ्रीका में कोई भूखा मर रहा है मरने दो मतलब वैसे नहीं मरने देना बट इट शुड नॉट बी योर कंसर्न फॉर यूपीएससी एनीथिंग इन विच इंडिया इज अ पार्टी और इंडियाज इंटरेस्ट आर इंपैक्टेड दैट यू हैव टू स्टडी सॉरी हाँ ह्यूमन राइट आप पढ़ सकते हैं पर इसमें देखिए आपका इतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा पर ह्यूमन राइट्स का क्यों पढ़ेंगे बिकॉज पैराडिम इंडिया पे भी आता है जैसा अभी वॉर हो रही है हाँ दिन रहते इतने साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते इवन वी फॉरगेट सम टाइम आर्टिकल्स तो वो फैक्चुअल डेट वो आपके दिमाग से निकलना ही निकलना है तो उसके लिए क्या करना है बिफोर प्रीलिम्स 2 मंथ क्लियर चलिए हैव अ नाइस ऑनलाइन वाले बच्चों के साथ बहुत गलत